बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। डियर टीचर्स, आज का हमारा लेसन है इट्स अबाउट राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आप जानती हैं कि हम जिस एक्टिविटी के थ्रू करवाते हैं दैट इज रीडिंग एंड देन वी मेक देम प्रैक्टिस सेइंग द वर्ड्स. Recognize and differentiate between sounds in the environment. There's a little spelling mistake here. You can please correct it in your books. Recognition of phonemes and phonemic awareness in spoken words. So now teachers, we are going to practice some sounds which words which have the same ending sound. तो बच्चों स्क्रीन पे देख के बताइए कि ये किस चीज की तस्वीर लग रही है आपको. This is a flash card of a fat boy. Fat. This is a flashcard of a cat. So fat and cat. Fat cat. So if I say them together, fat cat. Good. Now let's see some more words. Rat, hat, mat, sat. So टीचर्स, आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स मौजूद हैं इस लेसन की जो प्रेजेंटेशन उसमें. अगर आपने वो प्रिंट किए हैं तो ठीक है, ये तो स्क्रीन पे आप इनको बार बार दिखा के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ये हैं आज के हमारे राइमिंग वर्ड्स. और व्हाट इज द डिफरेंस? The starting sound is different, but the ending sound is same. At, rat, hat, mat, sat. और इसके साथ साथ हमने दो वर्ड्स पहले भी पढ़े थे, फैट और बैट. गुड. सो जब हम इन सब साउंड्स को कंबाइन करते हैं या इनके बारे में बात करते हैं गो में, फैट, बैट, रैट, मैट, हैट, कैट, तो इस सब की जो साउंड एंडिंग है सेम है. सो दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स. टीचर्स, एज यू नो, राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड. फॉर एग्जाम्पल, कैट एंड हैट आर राइमिंग वर्ड्स. Yes, this is how we're going to practice and this is what we are going to do. So आज का जो हमारा टॉपिक है it's about rhyming words. कुछ rhyming words तो हम किताब में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन और नए नए rhyming words जो इस साउंड पे एंड करते हैं बच्चों आपने खुद बनाने हैं. तो अभी इस तस्वीर को देख के बताइए कि what is it? It's a toy. Yes, we play with it and we play cricket. So what is this called? It's a bat. At. At sound is there. Then we have rat. Then this is a picture of a mat. Cat. Good and well done. Now children, you are going to trace these sounds and complete the words. टीचर्स, आज का मेन टास्क ये है कि खुद देखें कि जब ये इनिशियल साउंड को चेंज करते हैं तो राइमिंग वर्ड में टोटली ऑब्जेक्ट और मीनिंग चेंज हो जाता है. सो आपने बच्चों को डिफरेंट वर्ड्स मे बी सेंसिबल और नॉन सेंस वर्ड्स जो भी वो बनाना चाहें, जैसे कैट, मैट, बैट, लैट, शैट, हैट, जो भी वर्ड्स इनके जहन में आते हैं, लेट देम मेक इट बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड द राइम, the similar ending sound. तो इसी के लिए टीचर्स आपके जो टास्क ग्रुप एक्टिविटी में दिया गया है, बच्चों से कहें कि अपना नाम पुकार और अपने नाम से मिलते जुलते जो क्लासरूम में बच्चे हैं उनके नामों को आइडेंटिफाई करें, जैसे रेहान, अदनान, कामरान. इस तरह के जो नाम हैं इनके साउंड्स जो हैं वो एंड में सिमिलर हैं. सादिया, हादिया, नादिया, दे विल बी एबल टू रिलेट कि ये जो वर्ड्स हैं ये भी तो सेम एंड करते हैं, सेम साउंड करते हैं. तो टीचर्स, आपके जो टीचर नोट दिया गया है उसमें आपने इन वर्ड्स की वोकैबुलरी को बार बार बच्चों के साथ रिपीट करना है और इन जो एंडिंग साउंड्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवानी है. किताब का जो सफ़ा है जब बच्चे मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आपने इनको किसी रीडिंग एक्टिविटी में इंगेज करना है. और ये वर्कशीट जो आपके लिए दी गई है बच्चों, ये आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टीचर आपको दे देंगी. आपने रीड करना है और कलर करना है और उसके साथ साथ ज़रा मैच भी करके बताना है कि किस पिक्चर का कौन सा नाम है. सो टीचर्स, ये टास्क कंप्लीट होना तभी पॉसिबल होगा जब आप क्लास में इनको वैरायटी देंगी रीडिंग करने के लिए और बार बार इनसे ड्रिल करवाएंगी कि इन साउंड्स को वो रीड करें, क्योंकि आपका जो टास्क है it is about recognize and differentiate between sounds in the environment. That means they will make more words. And the recognition of phonemes, that means the more they hear the sound, the more they will be able to identify it. So this is a small task or art activity, teachers.
जिसमें आपको टीचर्स ऐसे वर्ड्स लिख के देंगी और आप एक छोटा सा जो है वो क्लास का डिस्प्ले तैयार कर सकती हैं क्लास में लगाने के लिए। गिव देम अ बास्केट विद लिटिल चिट्स जिसके बहुत सारे वर्ड्स लिखे हों, लेकिन उनमें से ये एट के वर्ड्स निकाल के आपको ऐसा कोई पोस्टर बना के दिखाएंगे। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये आपकी बात सुनते हैं और इनको लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आते हैं, इसलिए आपने इन बच्चों से तमाम एक्टिविटीज़ करवानी है क्योंकि एक्टिविटीज़ से इनको ज़्यादा अच्छा समझ आता है और ये इंजॉय भी करते हैं। सो बच्चों, कैरी ऑन विद द एक्टिविटी, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क इन टाइम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।